starting the presentation, starting with the introduction, the novel is divided into three parts. The first part is entitled as The Window, the second is Time Passes, and the third is The Lighthouse. So the point here is that the overall overall plot of the story is very simple. There's nothing in it. Like द विंडो में World War I से एक दिन पहले का टाइम बताया है, जिसमें एक रैमसे फैमिली होती है, वो रहने के लिए आते हैं अपने समर हाउस में, और उनके साथ उनके कुछ गेस्ट भी होते हैं, और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि लाइट हाउस जाना है, बट वो नहीं जाते. फिर टाइम पैसेस में एकदम से 10 ईयर्स का टाइम गुजारा जाता है, जिसमें ऑफ स्टेज इवेंट्स होते हैं, और इसमें रैमसे फैमिली के कुछ मेंबर्स मर भी जाते हैं, और जो समर हाउस होता है उसको 10 साल के लिए अबेंडन कर दिया जाता है. और फिर द लाइट हाउस लास्ट पार्ट में वो लोग वापस 10 साल बाद आते हैं, और फिर टाइम स्लोली दिखाया जाता है, और फिर वो लोग यहाँ पे फाइनली वो लोग लाइट हाउस को देखने के लिए जाते हैं. सो द पॉइंट हियर इज दैट द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज वेरी simple, but what make it so much important is that the reason behind the importance of this novel is that Virginia Woolf uses a stream of consciousness in this novel. So what is the stream of consciousness? It is everything, the actions and the thoughts that are going on in the conscious mind of a human or of a personality, and like all the thoughts in his conscious mind, और जो इन्वायरमेंटल इवेंट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह जो उससे रिलेटेड होते हैं कॉन्शियस माइंड की थॉट्स से, वो सब कुछ इसमें बताया गया. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट द नॉवल प्रेजेंट्स अ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ इमोशंस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. As I have already told you that the novel is full of symbols, and each symbol is have a different interpretations. These are differently interpreted by different scholars and different critics. और मतलब कि कुछ ऐसे सिम्बल्स ने नॉवल के अंदर जो हर करेक्टर के लिए डिफरेंटली इंटरप्रेट किए जा रहे हैं. जैसे लाइट हाउस है, लाइट हाउस को एक करेक्टर किसी और तरह से देख रहा है, दूसरा करेक्टर उसको किसी और तरह से देख रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे. बट इसके बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने नॉवल में ही हमें बता दिया, एज जेम्स सेड दैट नथिंग इज सिंपली वन थिंग. फॉर इट मीन्स दैट वन सिंबल कुड बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली. वर्जीनिया वुल्फ ने हर सिंबल को जो कि डिफरेंटली इंटरप्रेट किए जा रहे हैं, उनको उन्होंने प्रेजेंट ही ऐसे किया कि वो डिफरेंटली इंटरप्रेट किए जाएं. According to Virginia Woolf, repeated images, characters, atmosphere, and actions, as she had used this repetition in this novel, so these are very important for symbolical point of view. उन्होंने अपनी theory of symbol में हमें एक point दिया था that why do we need to use so many symbols, or why do we need to use symbols. She said that words are meager in comparison with ideas. Words कम हैं ideas से. हर word मतलब हर idea के लिए हमारे पास words नहीं होते हैं उनको present करने के लिए. So we need to use symbols for the representation of those ideas. Another fact is that how do she use so many symbols. वो सोच कैसे लेती थी इन सिम्बल्स के बारे में कि वर्जीनिया वुल्फ मेंटली इल थी, उनको एनजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था. जो एनजाइटी का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, और जो बंदा बहुत ज़्यादा सोच रहा है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिम्बल्स उसके माइंड में आते जाएंगे. वो लाइफ पे ही सोच रहा होता है ज़्यादातर, और मतलब इनको हेलुसिनेशंस भी होती थी. और जब ये टू द लाइट हाउस लिख रही थी उस टाइम भी इनको पैनिक अटैक्स आए थे, और उसके बाद ये 2 months तक बिल्कुल नहीं लिख पाई थी. तो अब 2 months के टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने क्या किया होगा. एनजाइटी डिप्रेशन की पेशेंट थी, तो उन्होंने सोचा होगा उस टाइम ड्यूरेशन में. तो वो जो टाइम ड्यूरेशन 2 months का था ना, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस नॉवल में जो सिम्बल्स यूज़ किए हैं वो सारे सिम्बल्स उन्होंने मतलब मोस्ट ऑफ देम उन्होंने उसी टाइम पीरियड में सोचे थे. द फर्स्ट most important symbol is the lighthouse, that is the title of the novel. The lighthouse usually it represents light and hope, but here the first mentioning of the lighthouse is very realistic and primarily negative.
It describes the disadvantages of having to live and work in a lighthouse. So what does it represent here? It represents that nothing is perfect. Every positive thing has a negative point, and every negative thing have a few positive points. So the next is hope, and the third is traditions. So lighthouse is a traditional tower that is used to show paths to the ships in the storms and at the night. So it shows the traditions. The next is lack of attainability. So this symbol is very important, that is being shown by the lighthouse. अब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट में उन्होंने किया था कि हम लाइट हाउस जाएंगे, बट वो नहीं जा पाए थे. तो ये बाकी करेक्टर्स की भी लैक ऑफ अटेनेबिलिटी को शो कर रहा है कि लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम चाहते हैं करना पर हम नहीं कर पाते. जैसे कि मिस्टर रैमसे, ही वॉन्टेड हर वाइफ टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स बट शी नेवर डू सो. उसी तरह से मिसेस रैमसे, वो भी चाहती हैं जाना लाइट हाउस, लेकिन वो चाहती हैं अपने बेटे को लाइट हाउस ले जाना पर वो नहीं ले जा पाती. सिमिलरली लिली, जो कि पेंटिंग कंप्लीट करना चाहती है पर वो नहीं कर पाती. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में बंदे की जो कि वो करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता. नेक्स्ट है रिमाइंडर ऑफ द पास्ट. व्हेन दे in the last part of the novel, the lighthouse reminds them 10 years before. The next is, as we have already discussed, that a single symbol in the novel is interpreted differently by different characters. So for Mrs. Ramsay, the lighthouse was the symbol of truth, but on the other hand, the lighthouse was a symbol of escape for Mr. Ramsay. उनका जो सन था जेम्स, उसके लिए तो इंटायरली ही ये डिफरेंट सिंबल था. जैसे वो शो करता है चेंज इन ह्यूमन्स पर्सनालिटी, के टाइम के साथ साथ ह्यूमन का जो माइंड होता है उसकी पर्सनालिटी वो चेंज हो जाती है. जैसे कि जो जेम्स था वो अपने चाइल्डहुड में जाना चाहता था लाइट हाउस, वो लाइट हाउस को किसी और तरह से देखता था, उसको फैंटेसाइज करता था. बट जब 10 साल बाद वो वहाँ नहीं जाना चाहता था, अब वो उस टावर को किसी और तरह से देख रहा था. तो ये शो करता है कि टाइम के साथ साथ ह्यूमन की पर्सनालिटी कितनी चेंज हो जाती है. तो नेक्स्ट जो सिंबल है वो है द विंडो. द विंडो जो कि टाइटल भी है. A screen, it shows a screen between reality and consciousness and the imperfections of our knowledge. क्योंकि हम लोगों को वही कुछ पता होता है जो विंडो की इस तरफ होता है. विंडो की उस तरफ काफ़ी कुछ और होता है, लेकिन हम लोगों को सब कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा होता. तो जो कुछ सामने होता है वो हमारी नॉलेज में होता है, और हमारी नॉलेज कभी भी परफेक्ट नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा imperfections होती हैं. तो द नेक्स्ट है द रैमसेस हाउस. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है. द रिवेंजेस ऑफ वॉर एंड डिस्ट्रक्शन एंड द पैसेज ऑफ टाइम आर रिफ्लेक्टेड in the condition of the house, that how it is abandoned for 10 years, that once it was a very happy place where they came every year, and then they abandoned it for 10 years. And जो भी घर की हालत थी उस 10 साल में, बट उस 10 साल के बाद उस घर को दोबारा ठीक किया जाता है. And it mirrors the interior of the characters. Then the sea and the waves. These two things are shown throughout the novel. The ever-changing, ever-moving wave symbolizes the constant forward movement of time and the changes it brings. It shows the eternal flux of change in the life of a person. And the sea is a powerful reminder of the impermanence and delicacy of human life and accomplishments. So the next next symbol is Lily's painting. It is another very important symbol. It shows the women's struggle in patriarchal society. As Virginia Woolf was a feminist, and she used to symbolize that feminist thing in this symbol. She disapproves the popular narrative of that time that women can't paint or write. Her painting represents the dedication to the feminist artist's vision. So the next is the boar skull. ये स्कल हमें वहाँ पे दिखता है स्टोरी में
कि जब उनका डिनर पार्टी ख़त्म होती है और उसके बाद जो रेमसेस चिल्ड्रन होते हैं 8, वो जाते हैं और उनको नर्सरी वॉल के ऊपर ये लटका हुआ नज़र आता है। मतलब उन्होंने डिनर पार्टी में एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है, जो मिसेस रेमसे होती है उन्होंने भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है, बट सडनली उनको कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जिससे वो डर जाते हैं और मिसेस रैमसे को वो देखकर डेथ याद आ जाती है। So, the presence of the skull acts as a disturbing reminder that death is always at hand. Death is certain, life is uncertain, even during life's most blissful moment. The fruit basket. The basket testifies both to the frozen quality of beauty that Lily described and to beauty's seductive and soothing quality. The next symbol is the storm in the sea. Storm consists of both wind and rain, and as air is the element representing the mind and water is the element representing the emotions, storm symbolizes a war between the thoughts and emotions. Metamorphically, storms are our inner demons, which torment both our mind and our subconscious. The next, as a few characters of the novel are also a symbol used in the novel. So the first of them is Mr. Ramsay. Mr. Ramsay, he has some flaws as his children found in his character. Mr. Ramsay remains the symbol of a sterile, destructive barrier to the relationship. And Mrs. Ramsay, on the other hand, can be regarded as the creator of a fertile human relationship. She becomes a symbol of comfort, warmth, sympathy, and reassurance. She appears as a unifying force and harmony of good fellowship. And so we have a lot of symbols, and some minor symbols of them are rocks, reefs, and shallow water that represent different things. Rocks, shallow water, and reefs show sufferings of life, danger, emotions, and difficulties respectively. So these were the symbols. Now let's conclude the topic that the lighthouse is a masterpiece of construction through symbolism. So this symbolism helps us to understand that that stream of consciousness and that emotions that Virginia Woolf have shown in the novel. This serves the purpose of introspection. Introspection क्या होता है? किसी की consciousness को, किसी के thoughts को समझना, self awareness and openness to the unconsciousness in the world. Composed on the flow of sensations, thoughts, memories, associations, and reflections in the ambit of symbol, the action moves on normal constructional lines from scene to scene and from the mind to mind. As we have already know that every idea couldn't be expressed by words, so we use these symbols to understand those ideas. There is less complication. These shifts from one consciousness to another, and these movements are made further easier by allowing every incident to place in close-knit homogeneous world. सबकी जो थॉट्स थी वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी और हमें हर थॉट दूसरी आइडिया को समझने में हेल्प कर रही थी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं.